Okay, this lecture is the remaining part of the previous lecture. So this is very small lecture. So this is the continuation of the address in target code. This is part 2. So little bit we have left there. So we will continue here. So the next was here that we have stack allocation. So static allocation becomes the stack allocation by using the relative address for the storage in activation record. So in in stack allocation, however, the position of activation record for procedure is not known until runtime. This position is usually stored in a register. So words in activation record can be accessed as offset from the value of this register. The indexed address mode of our target machine is better for this purpose. So here we will discuss about, we will use indexed address mode. So relative address in an activation record can be taken as offset from any position of the activation record. For the convenience, we use positive offset by maintaining in a register SP stands for special register, that is stack pointer register, to the beginning of the activation record on the TOS, that is the top of the stack. So target code procedure call. So if we want to call the procedure, how the target code can be implemented. So when the procedure call occurs, the calling procedure increments SP stands for a stack pointer, and transfer control to the call procedure. After control returns to the caller, we decrement the stack pointer, thereby deallocating the activation record of the call procedure. The code for the first procedure initializes the stack by setting stack pointer to the start of the stack area. LD, that is the load, SP has a stack start, so we initialize the stack here, and code for the first procedure and then halt. The target code, so target for procedure call statement, how the call statement can be made. The call statement consists of three parts. What is the increment of SP, that is the stack pointer, save the return address, and then transfer control to the call procedure. So how it can be done? It can be done like this: add SP comma SP has caller dot record size st. So what we are doing, we are just incrementing the add, that is in stack pointer, and then we are storing the hash here plus 16, that is the save the return address, because after the 16 address there we have to return here, and then we are branching the callie.code area. The operand has caller record size represents the size of the activation record. So add instruction makes SP, that is the stack pointer, to point to the next activation record. The operand has here plus 16 in ST instruction is the address of the instruction followed by BR. It is saved in the address pointed to by the SP, that is the stack pointer. So now let us learn how what is the return sequence. Return sequence में कितने part? Return के लिए दो sequence हमें मिलेगा. First part is the call procedure transfer the control to the return address using the statement like this: br asterisk s0 sp. तो top of the stack पर जो होगा वहाँ पर वो return करेगा, इसलिए हम लोग branch कर रहे हैं यहाँ पर, है ना. This is the unconditional branch to that location. The reason asterisk 0 sp is br instruction is we need two level of indirection. 0 sp is the address of the first word in the activation record, and asterisk 0 sp is the return address, there the address is saved. The second part is to return sequence in the caller which decrements the stack point sp, that is the stack pointer के जो रजिस्टर इसकी वैल्यू को डिक्रीज करना होगा. डिक्रीज करना काफ़ी सिंपल है. सब sp हैश कॉलर डॉट रिकॉर्ड साइज. तो जो भी रिकॉर्ड साइज जो ऐड किया था वो हम सिंपली डिक्रीमेंट कर दिया. तो ये एक एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है आपके लिए. सो दिस इज एक्शन 1 कॉल क्यू, एक्शन 2 हॉल्ट कॉल कोड फॉर पी, एक्शन 3 रिटर्न कोड फॉर क्यू यहाँ दिया गया है. तो ये आपका जो दिया गया है, दिस इज द एब्स्ट्रैक्ट एग्जाम्पल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कह सकते हैं क्विक सॉर्ट के लिए. तो क्विक सॉर्ट में कोड फॉर एम ये है मेन फंक्शन, कोड फॉर पी ये है पार्टीशन फंक्शन, कोड फॉर क्यू ये है क्विक सॉर्ट के लिए. तो इस तरीके से यहाँ पर ये दिया गया है, और इसका जो इक्विवेलेंट जो प्रोग्राम है वो यहाँ पर दिया, कोड फॉर एम. सो व्हाट इज कोड फॉर एम? let the starting code for m, that is the main m, is at 100. देखिए 100 पर ये हमारा प्रोग्राम यहाँ पर लिखा गया है. The code partition p
एज एट 200, ये पार्टीशन फंक्शन मान लीजिए यहाँ लिखा गया है, द कोड क्यू क्विक सॉर्ट क्यू एज द 300 क्विक सॉर्ट वो यहाँ लिखा गया है, एंड स्टैक इज 600, वो यहाँ पर स्टैक वाला रिमेनिंग पार्ट यहाँ पर दिया गया है, ये चीज़ है यहाँ पर। सो एज्यूम दैट एक्शन 4 कंटेंस कंडीशनल जंप, तो एक्शन 4 की अगर हम लोग बात करें, ये आपका एक तरीके से कंडीशनल जंप ये प्रोवाइड कर रहा है, और टू द एड्रेस 456, ये यहाँ पर 456, अगर कंडीशन ट्रू होगा तो 456 पर आएगा, और नहीं तो नहीं आएगा ये यहाँ पर, और आगे कंटिन्यू ये आपका कर सकता है। अदरवाइज द रिकर्सिव प्रोसीजर क्यू इज कॉल्ड इटसेल्फ, नहीं तो इस क्यू को ही वो कॉल करता चला जाएगा। क्विक क्यू स्टैंड्स फॉर इधर क्विक सॉर्ट। इफ एम साइज, पी साइज, क्विक क्यू साइज आर 20, 40 एंड 60, तो एम साइज आपका मेन फंक्शन मान लीजिए 20 है, पी साइज में पार्टीशन फंक्शन मान लीजिए इसकी साइज है 40, क्यू साइज मतलब क्विक सॉर्ट की जो साइज है वो है मान लीजिए 60, है ना। तो और द फर्स्ट एड्रेस आपका अगर 100 पर, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन अगर 100 पर लिखा गया है, तो वी इनिशियलाइज एस पी टू 600, तो यहाँ पर सबसे पहला स्टेटमेंट लिया गया एल डी एस पी कॉमा हैज 600, तो ये 600 लोकेशन को स्टैक पॉइंटर की वैल्यू यहाँ पर दे रहा है, मतलब यहाँ से हमारा स्टैक स्टार्ट हो रहा है, वो यहाँ से स्टैक पहले हम लोगों ने यहाँ पर ले लिया यहाँ पर इस तरीके से। सो अब इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं एस पी होल्ड्स 620, डेट इज 600 प्लस 20 जस्ट बिफोर द कंट्रोल ऑफ द एम टू क्यू, है ना। सो एम से जब आप क्यू पर अगर आप जंप करते हैं, तो क्यू मतलब हो गया एक्शन, फिर पर अगर आप जंप करते हैं तो इसके कॉल करने से जस्ट पहले ये क्या स्टोर करेगा यहाँ पर, एक तरीके से 620 एस पी की जो वैल्यू होगी वो 620 आपका होगा। क्यों? क्योंकि जो इसकी जो साइज़ है वो है 20, तो 60 प्लस 20 डेट इज 620। सिमिलरली हेंस व्हेन वी कॉल क्यू, व्हेन क्यू कॉल्स पी, क्यू मतलब हो गया आपका क्विक सॉर्ट, जब पी को कॉल करता है तो ये क्या एड्रेस स्टोर करेगा 680, है ना, 680 प्लस 680 कैसे होगा, तो 680 ऐसे होगा, तो 620 तो पहले है और प्लस 60, तो 60 किसकी साइज है, क्विक सॉर्ट की साइज है, क्विक सॉर्ट की साइज देखिए यहाँ पर 60 है, तो प्लस 60 यहाँ पर कर रहे हैं, तो इस तरीके से ये हमारा कॉल आपका किया जा रहा है। तो इसमें मैक्सिमम इसका जो डेप्थ जो जाएगा वो 680 तक यहाँ पर जाएगा, है ना। सो इन दिस वे वी कैन